हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं 10th क्लास गैस पेपर कंप्यूटर साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को जो नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके लिए। डिफाइनिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। व्हाट इज रिजर्व वर्ड? डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। डिफरेंशिएट बिटवीन चार एंड इंट। ये डेटा टाइप्स की दो टाइप्स हैं और इनको डिफरेंस करना होता है। डिफाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर। व्हाट इज सिंटैक्स एरर? Why you use arithmetic operator? Define program or software. Why it is necessary to control the conditional in a loop? What is the use of programming language? स्टूडेंट ये निहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं, लिहाजा इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। Which function of C language is used to display output on screen? Define compiler. What is the common mistake in compound statement? How a C language program statement ends? What is meant by the programming environment? What points are necessary for the arrangement of function in a program? What is ternary operator? What is the use of the floating point, the floating data type? What is the mean by the associated code? What is mean by the case sensitive language? Write the general structure of the of to make a function cell. What is the use of main function? Who developed C language? What is the text editor? What is the relationship between a computer and programming language? Define programmer. What information will be displayed in printf function? स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब हम चलते हैं। What is difference between the operator and operands? What is the escape sequence? Why do we need them? What is the difference between scanf and get? How can we exist from the loop? Write some of the mainly available IDE for C programming language. Write down a program that display DPS. What is logic and relation operator? What is format specifier? What is use of the backslash and escape sequence? Define index. What is the good problem solving approach? Write the name of the basic operator. What is the use of if statement? What is the most important property of an array? Define index. What is the use of the return keyword? Write down the name of the language translator. What is the use of the unary operator? Draw a flow chart of its if statement. When body of the loop is executed, what is the use of the character
the chart data type. Write down some advantage of function. Write down the type of the control structure. Define element of an array. इसके साथ array के साथ उसके टू टाइप्स भी लिख सकते हैं, जैसा 1D array, 2D array, ये भी लिख सकते हैं आप. Which expression can be used as condition? स्टूडेंट ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 4 की जाने हम चलते हैं. What is the body of the function? What is control and selection statements? स्टूडेंट ये निहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Difference between if statement and if else statement. What is data structure and loop structure? What is nested loop? What is the reusability? What is built-in function? What is for loop with example? With example का मतलब है सर, इसमें आप इसका कोड लिख सकते हैं कोई एग्जाम्पल के तौर पर, या आप डायग्राम बना दें इसकी. हाउ कैन वी एसोसिएट इफ एल्स in the if else statement? What is the use of the main function? Write the type of the character set of the C program language. What is mean by the precedence of operator? What is mean by the variable initialization? Why you use operator? How a function handle the complexity of the problem? What is the use of the additional arithmetic operator? What is mean by the separation of task? What is argument and parameter? What is the use of the studio.h header file? हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं इसके साथ. How would you arrange return statement in a function? What is the use of scanf function? What is the function definitions? What is the good problem solving approach? What is the use of array? What is the use of if else statement? Write down an example of the declaring an array. How a function handled by the complexity of the problem. What is mean by the syntax of the language? What is the use of the header file? When body of the loop is executed? स्टूडेंट ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4. ये शॉर्ट क्वेश्चन थे तमाम. अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब, जो निहायत इंपॉर्टेंट आपके लिए बनाए गए हैं. डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ ए कंपाइलर. राइट डाउन द रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल. हाउ कैन वी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज ए वेरिएबल. स्टूडेंट ये एक टॉपिक है वेरिएबल वाला, आप इसे जरूर तैयार करें. डिफाइन रिलेशन ऑपरेटर. राइट डाउन यूजेस ऑफ रिलेशन ऑपरेटर्स. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, डिफाइन लॉजिकल ऑपरेटर. राइट डाउन द यूजेस ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर. इसके टाइप्स भी इसमें दरमियान में आ जाते हैं. इसमें राइट ए प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप, प्रिंट इवन और ऑड. स्टूडेंट हर क्वेश्चन के बाद एक प्रोग्राम इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर देंगे. 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का होगा, एक प्रोग्रामिंग में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो लिहाजा आप प्रोग्राम की भी प्रैक्टिस किया करें. प्रोग्राम जरूर आता है इसमें से. ये निहायत इंपॉर्टेंट कुछ प्रोग्राम रखे गए हैं आपके सामने, आप इसे जरूर प्रैक्टिस करें. राइट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट फैक्टोरियल नंबर बाय ए यूजर. राइट ए प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू प्रिंट टेबल एंड एनी नंबर. इनके टेबल्स लिखने होते हैं, किसी भी नंबर का आप टेबल लिख सकते हैं इसमें. स्टूडेंट इस दफा के जो निहायत इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन थे और प्रोग्राम थे वो हमने इसमें रखे हैं. राइट प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप, प्रिंट करें इवन और ऑड नंबर्स को. इवन ऑड वो बाजुकात 5 भी पूछ सकते हैं और बाजुकात 10 में से भी चूज कर सकते हैं, तो लिहाजा आप दोनों की प्रैक्टिस करें. स्टूडेंट ये था आपके लिए निहायत इंपॉर्टेंट. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया तो सब्सक्राइब को बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके.
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।